Hi, everyone. This is Viren again. So आज का वीडियो मैं ज़्यादातर हिंदी में लूँगा एंड सेकंड थिंग दैट बिफोर वीडियो स्टार्ट एक अपडेट है। लास्ट वीडियो में मुझे फीडबैक आया था कि वीडियो थोड़ा सा लाइक वॉइस का इश्यूज है। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने माइक्रोफोन अपग्रेड किया है एंड आई कैन फील दैट ये माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड जो बैकग्राउंड नॉइज़ था वो भी आई थिंक कैंसल हो चुका है एंड दिस वीडियो विल हैव अ क्लियर वॉइस। Okay, so this particular video is the next part of the CSCRF, and on the CSCRF we will not take much videos, like two or three videos probably in total, and then further we'll start talking about specific technologies and controls basically in the cybersecurity. Okay. So, of course, those will be part of CSCRF, but those will be actually part of the ISO 27001 framework only. And I think that will cover most of the area of the cybersecurity. Okay. Then, okay. So to start with the video, today we will talk about the goals and functions of the CSCRF framework. So as discussed earlier video, cyber security and cyber resilience. To brief about, just a small revamp. Cyber security means we can, prevent the attack. Cyber resilience means what happen if the attack happens. How we can be ready to tackle the situation. So here we assume that attack will gonna happen. So these two things are very much opposite, but works parallelly. Now, if we talk about the okay, so those CSCR basically broadly cover five cyber resilience like resiliency goals adopted from the crisis management plan, that is from the 13 only. So if you go on Google for the CCMP plan of the 13, so you will find the similar goals and functions. Of course, fundamentally ये सब चीज़ें बहुत कॉमन रहती हैं. So we'll start with the goals. There are total five goals that we need to achieve. Before starting this, I just wanted to explain you what is the function, what is the goal. So goal is like what you want to achieve in a future, like what you want to achieve finally. That will be your goal in terms of specific specific things. So and functions basically are very much similar to a pathway to achieve the goals. Okay. Now, if we talk about the goals, so the first goal is anticipate. Let me share my screen first. One second. So hi. So I think my screen is visible. So if you can see in the screen, so there are five goals. First is anticipate, where we can understand like tayar rahe, as I discussed earlier. You can just go and read the CSCRF. It's very simple. So we need to be ready. So in anticipate, we say that we must proactively identify the and potential threat and vulnerabilities before they materialize. So of course, it's talk about the preparedness. Second goal is withstand. So they are saying that while attack, okay, so your system should be capable enough with the minimum disturbance. So they should be working with the minimum disturbance. Like अगर ransomware का अगर कुछ अटैक होता है तो वो सिस्टम के अलावा बाकी सब सिस्टम चलनी चाहिए. कैसे वो बाकी सब सिस्टम में बाकी बैकअप में वो स्प्रेड नहीं हो और उसको डिस्टर्ब ना करे. So your system should be capable enough, controlled enough. थर्ड इज कंटेन, ऑफ कोर्स एज डिस्कस, लाइक अगर रैंसमवेयर अटैक होता है तो वो उतने सिस्टम्स के बाहर नहीं जाना चाहिए. So rapid containment of the incident is critical to prevent the escalation and limit the damage. Then fourth is recover after incident. How quickly you can recover?
to the BAU. That is what it talks about the recover. Evil cyber threat. Okay, so this particular goal is bit different. It will not be mapped with any function. So here they talk about the learning. So whatever happens with your business during the incident, you should able to, like, you should learn from the incident. Like आपको सीखना है वो इंसिडेंट से, आपको उसका आरसीए निकालना है, कैसे हुआ है, उसको कैसे रोक सकते हैं, आगे फ्यूचर में कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल, अगर जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल को असेसमेंट करके उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से अपना कंट्रोल्स भी अपडेट करने पड़ते हैं। So this is the evil basically talk about that the continuous improvement. Okay, so these are the 5 goals. So all these 5 goals are, to achieve these 5 goals, what you need to do. So there are certain functions. Okay, functions like, फंक्शन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप, लाइक, आपके मतलब बिजनेस में भी अलग अलग फंक्शन रहेंगे। लाइक आईटी एक फंक्शन है, बैक ऑफिस एक फंक्शन है, ट्रेडिंग एक फंक्शन है, एक पूरा फंक्शन है जो ट्रेडिंग का मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वो एक फंक्शन है। तो सिमिलरली ऑल दिस गोल अचर अगर अचीव करना है तो देर आर डिफरेंट फंक्शंस दैट वी हैव टू सेटअप। So all this, so there are total 6 functions as per CSCRF. There can be more in the real world, but of course, as per the CSCRF, as per the cybersecurity, there are 6 more functions, and all these functions are mapped with the these particular goals. So we'll talk about the mapping further. So I'll just give you the brief about the functions. The functions are governance, identify, protect, detect, respond, and recover. Okay. So we'll be talking this about in detail in some time. So now, if we talk about the mapping with the this particular function with the goals. So first goal क्या था अपना anticipate. Okay, you can see the screen. For the reference, you just see the screen. So first goal tha anticipate. So here there are 4 function is mapped with this particular goal. It's a very big and deep go actually thing. So anticipate is mapped with the governance, identify, protect and detect. तो बेसिकली यहाँ पे क्या करता है कि हम लोग तैयार रहते हैं ये सब चीज़ के लिए। तो तैयार रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी बनाना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट करने के लिए हम लोग को इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। देन वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट इन्वेंट्री डेटा से जो उसको प्रोटेक्ट करना है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कंटिन्यूस मॉनिटर एंड डिटेक्ट कि अगर कुछ इश्यू हो रहा है क्या। आफ्टर ऑल दिस कंट्रोल इट मे पॉसिबल कि आपको मतलब कुछ तो वल्नरेबिलिटी रहेगी, जो नई वल्नरेबिलिटी आती है तो उसको डिटेक्ट करना चाहिए। तो वो सारा चीज़ एंटीसिपेट में आता है जो सो वो बोलता है कि हम लोग तैयार है। ओके, तैयार है ये 4 चीज़ करके। नाउ नेक्स्ट गोल इज विथस्टैंड एंड कंटेन। ये तो तैयार थे, फिर भी अगर कुछ इश्यू हुआ तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे कैसा होता है कि अगर कुछ इश्यू होता है तो वो लिमिटेड सिस्टम में कंट्रोल हो जाए, मिनिमम डिस्टर्बेंस आए बिजनेस को। अगर कुछ इश्यू था आईएसपी का, अगर इश्यू है डीडोस अगर अटैक होता है तो आपके पास दूसरा लिंक है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। अगर कुछ आईएसपी का इश्यू है तो आप दूसरे आईएसपी के थ्रू काम कर सकते हो। कुछ मालवेयर का फंक्शन हुआ तो आप वो दूसरे मतलब आप दूसरे सिस्टम से मैनेज कर सकते हो उसको कंटेन करके। तो विटसेंड आता है आपका रिस्पॉन्ड में। ओके, तो रिस्पॉन्ड एंड कंटेन मतलब जैसे ही इंसिडेंट होता है, विथस्टैंड एंड कंटेन दोनों फंक्शन दोनों रिलेटेड है रिस्पॉन्ड फंक्शन से। कुछ इंसिडेंट हुआ तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। So that is very important. Okay, sorry for that. Now the next function is recover. Of course, name suggests recover. गोल अपना रिकवरी का गोल है जो रिकवर फंक्शन से अटैच्ड है। एंड लास्ट फंक्शन इज इवॉल्व। तो ये कोई फंक्शन के साथ अटैच तो नहीं है, बट ये सारे फंक्शन से
मतलब जो भी आपको मतलब ज्ञान मिलता है उसके बेसिस पे आपको इवॉल्व होना है, आपको अपना इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्रूव करना है, इंटरनल पॉलिसी को अपडेट करना है। ओके, एज पर द न्यू बिजनेस, एज पर द industry updates. So we have to learn, basically evolve, basically talk about the learning. Now, quickly we'll take a real life example of the all these goal and functions quickly. Then we'll wrap up this video. Uh, so if we talk about the anticipate, so that is as I told you, like that is mapped with the governance. So governance basically क्या करता है कि governance ने decide करते हैं like policy making, हम लोग रोल डिफाइन करते हैं, अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली गवर्नेंस में मतलब टॉप मैनेजमेंट ज़्यादातर आता है जो डिफाइन करता है, फ्रेमवर्क डिफाइन करता है, सिक्योरिटी पोस्चर डिफाइन करता है, जो सोचता है कि हमारे इन कंपनी में ये टाइप का सिक्योरिटी पोस्चर होगा, उसके लिए ये पॉलिसी होगी, ये प्रोसेस हो गए, अगर कोई न्यू ज्वाइनी है तो उसका ये प्रोसेस होगा, ऑनबोर्डिंग का अगर एग्जिट है तो उसका ये प्रोसेस होगा, उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो ये सारा चीज़ गवर्नेंस में आता है। ओके, तो गवर्न करता है, बेसिकली वो मैनेज करता है सारी प्रोसेस को और अप्लाई करता है और उसको मॉनिटर भी करता है। तो दैट कम्स अंडर द गवर्नेंस। ओके, तो रेडी रहने के लिए ये बहुत चीज़ ये ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लाइक स्मॉल एग्जांपल, अगर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन का मैंने पॉलिसी बनाया, ओके, मतलब मुझे पॉलिसी बनाना है, तो जब तक मैनेजमेंट अगर डिसाइड नहीं करेगा कि स्मॉलर पॉलिसी मुझे स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन का पॉलिसी अगर बनाना है, एक्सक्यूज मी फॉर दिस, ओके, तो स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन का पॉलिसी मैनेजमेंट या तो कम्युनिटी डिसाइड करती है और वो पॉलिसी बनाती है, देन वो एनफोर्स होती है नीचे। So that will be a part of policy making. So that is called governance. Second thing है identify. So this is also connected with the anticipate. तैयार रहने के लिए तो बेसिकली क्या है, नो योर असेट्स, रिस्क, वल्नरेबिलिटी। ओके, सो बेसिकली इट्स अबाउट द रिस्क असेसमेंट। ओके, तो ये रिस्क असेसमेंट का पार्ट है। तो रिस्क असेसमेंट करने पहले पे आपको है ना, आपके पास क्या इन्वेंट्री है आपको मालूम होना चाहिए, आपके पास क्या डेटा है, आप क्या डेटा होल्ड करते हो, डेटा कैसे फ्लो करता है, डेटा कैसे प्रोसेस होता है, वो सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपको बताता है आइडेंटिफिकेशन। देन थर्ड है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब आपको प्रोटेक्ट करना है, बेसिकली इंक्रिप्ट करना है, सिक्योर करना है, दैट इज प्रोटेक्ट। देन डिटेक्ट। डिटेक्ट मतलब आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है, अगर कुछ इश्यू है तो आपको हो जाना चाहिए। मेजरली ये सॉक ऑपरेशंस में आता है, जो अगर कुछ इंसिडेंस होता है, इश्यू होता है, तो आपको तुरंत मालूम होना चाहिए, वल्नरेबिलिटी आपको मालूम होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज। एंड देन विथस्टैंड कंटेंट के लिए आपका रिस्पॉन्ड है। रिस्पॉन्स में कुछ अगर रैनसमवेयर आया तो आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, उसका एक पॉलिसी होना चाहिए। अगर कुछ आईएसपी डाउन हुआ तो उसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे, आप कैसे काम करेंगे, उसका एक पॉलिसी होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। वो सब इसमें कवर होता है रिस्पॉन्स में। रिकवर बेसिकली डीसीबी, डीआर ये सब रिकवरिंग में आता है, बैकअप रिस्टोरेशन ये सब चीज़ रिकवरी में आता है। एंड इवॉल्व ऑफ कोर्स, थ्रेट कीप चेंजिंग एंड वी मस्ट बी इम्प्रूविंग। तो यहाँ पे लर्निंग एज डिस्कस, लर्निंग का आता है यहाँ पे। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर फिशिंग अटैक होता है तो आफ्टर फिशिंग मतलब फिशिंग अटैक अगर रिजॉल्व भी कर दिया, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद हमको ट्रेनिंग देना चाहिए। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस। आफ्टर incidents we learn that we have to train the employee. So that is what all learning. So this was the very quick video about the function and goals and function and mapping with each other. तो आप पहले फर्स्ट वीडियो है उसको भी रेफर करिए और ये वीडियो को भी थोड़ा रेफर करिए, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आएगा एंड यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द CSCRF completely. And in further video we'll definitely talk about the controls, specific controls in the system. We'll start with the first what we need to do, एंड रिस्क फॉर रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, रिस्क फ्रेमवर्क कैसे होता है, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल in the further video. So it will be focus on the cyber security only. Anyways, thank you very much.
Please like and subscribe my video and share the video. Thank you very much. Thanks.